Hello students, now we solve the numericals of oscillation. So sum number 14.4, which of the following function of a time represents simple harmonic motion, periodic motion but not simple harmonic and non-periodic motion. Give the period of each case of periodic motion. Okay, that is here you have to find out the period also. तो पीरियड के लिए हम यूज़ करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t ये रिलेशन. ओके, तो सी फर्स्ट नंबर ए. सो इन दिस ए नंबर वी हैव साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी. ओके, नाउ हियर वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √2 1/√2 sin omega t minus 1/√2 cos omega t. Okay, that is equal to √2 1/√2, that is equal to you can say cos pi/4 sin omega t minus sin pi/4 cos omega t. Okay, so it is a case of sin alpha minus beta. कौन सा होगा? sin alpha minus beta, that is equal to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. ओके, तो अल्फ़ा हम कहेंगे ओमेगा टी एंड बीटा कहेंगे हम pi/4, राइट. सो दैट मीन्स यू कैन से इट इज़ अ √2 sin ओमेगा टी माइनस pi/4, राइट. सो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 कंपेयर विथ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5. ओके, सो हियर you can say that omega is equal to 2π/t, that means t is equal to 2π/omega, so it is a period, right. So first done. Second number, sin cube omega t. What? y is equal to sin cube omega t. तो इसका हम करेंगे सॉल्व. तो 1/4 साइन क्यूब ओमेगा टी को हम सॉल्व करते हैं 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी. ओके, सो यहाँ पर ईच टर्म रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट हियर देयर इज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक्स इज नॉट सिंपल हार्मोनिक बट इट इज अ पीरियोडिक. बराबर है, यहाँ पर सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, बराबर. सो इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन. सो यू कैन से इट इज पीरियोडिक मोशन. ओके, थर्ड नंबर, y इज इक्वल टू 3 cos pi/4 माइनस 2 ओमेगा t. Okay, that is equal to 3 cos 2 omega t माइनस pi/4 भी लिख सकते हैं. why because cos माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू यू कैन से cos थीटा. बराबर है, मतलब यहाँ पर हम माइनस कंसिडर कर सकते हैं, राइट. सो हियर it is a simple harmonic motion. What you can say, it represent simple harmonic motion. Okay, अब यहाँ पर हम कहेंगे ओमेगा इज इक्वल टू, और यू कैन से 2 ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, दैट मीन t इज इक्वल टू π/ओमेगा. फोर्थ नंबर, दैट इज अ d cos omega t plus cos 3 omega t
plus cos phi omega t. Each cosine function is simple harmonic, but superposition is only harmonic. It is not simple harmonic, it is a periodic motion. Okay, so you can say each cosine function is simple harmonic motion, but its superposition, good morning, but superposition of function is not simple harmonic motion, but it is periodic motion. What? It is a periodic motion. Fifth number, one plus omega t plus omega square t square. It is not periodic, it is not simple harmonic and not periodic. Not simple harmonic motion or not periodic motion, right friends? So it is easy questions. Next number 14.6, which of the following relationship between the acceleration and displacement involve simple harmonic motion? तो हमारे पास acceleration का equation है बेटा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओके, तो ये x का फॉर्म वाला खाली इक्वेशन नंबर c है. ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इसको सेट करता है, वो है c. दैट इज योर करेक्ट आंसर इज c. नेक्स्ट नंबर 14.7, a motion of particle executing simple harmonic motion is described by x is equal to a cos omega t plus phi. ओके, हमारे पास कौन सा फंक्शन है? सो यू कैन से x at any time t that is equal to a cos omega t plus phi. Okay, if the initial, that is at t is equal to 0, the position of particle is 1 centimeter, x is equal to 1 centimeter, and the initial velocity is omega centimeter per second. You can say v0 omega centimeter per second. What are the amplitude and initial phase angle? The angular frequency of particle is pi per second. So you can say omega is equal to pi radian per second. If the instead of cosine function we choose the sine function, it is described by x is equal to b sine omega t plus pi. It's the same thing that we have to define. Okay, चलो पहले हम cos फंक्शन के लिए फाइंड कर लेते हैं. चलो सब्सटीट्यूट करते हैं. x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस पाई में x इज इक्वल टू क्या है? 1 is equal to a cos omega into 0 plus phi. That means 1 is equal to a cos phi. Okay, you can say it is equation number 2. चलो now v is equal to dx by dt, that is equal to d by dt of x, that is equal to what? a cos ओमेगा t प्लस 5. चलो डिफ्रेंशिएशन करते हैं. दैट इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस का होगा माइनस साइन ओमेगा t प्लस 5. ओके, t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 v है हमारे पास ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड. चलो सब्सटीट्यूट करें. दैट इज यू कैन से v इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन फाई. देयरफॉर you can say that
a sin phi is equal to -1. You can say equation number 3. चलो, now squaring and adding from equation 2 and 3, you can say square and add, right? So you can say a square cos square phi plus a square sin square phi, that is equal to 1 plus 1. दोनों को स्क्वायर किया एंड ऐड किया, सो ए स्क्वायर इज अ कॉमन cos square phi plus sin square phi, that is equal to 1 plus 1, that is equal to 2. So a square is equal to 2, that implies a is equal to √2 centimeter. Okay, चलो अब हम रेशियो ले लेते हैं. दैट इज अ डिवाइड दिस इक्वेशन, दैट इज अ a sin phi upon a cos phi, that is equal to -1 upon 1, that is equal to -1. a get cancel, so you can say tan phi is equal to -1. चलो tan phi is equal to -1 है, so you can say it is the 3 pi by 4, 7 pi by 4 and so on. Okay, तो ये हो गया आपका पहला, दैट इज अ कॉस फंक्शन. सिमिलरली सपोज यू हैव अ साइन फंक्शन, दैट इज यू कैन से दैट x इज इक्वल टू, दूसरा केस हम कंसीडर करते हैं, x इज इक्वल टू b साइन ओमेगा t प्लस अल्फा ले लेते हैं. ओके, चलो you can say now the same case, x is equal to 1 is equal to b sin omega into 0 plus alpha. Therefore b sin alpha is equal to 1. You can say equation number 1. चलो, now v is equal to dx by dt, that is equal to d by dt of x, that is equal to b sin omega t plus alpha. चलो डिफ्रेंशिएशन करते हैं. b साइन का होगा cos, b ओमेगा cos ओमेगा t प्लस अल्फा, राइट. चलो अब v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, सो v इज इक्वल टू है ओमेगा इज इक्वल टू बी ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू 0 प्लस अल्फा. चलो ओमेगा ओमेगा गेट कैंसल, देयरफॉर यू कैन से बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1. ओके, बी साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड यू हैव बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1. चलो वंस अगेन squaring and adding, equation number 1, you can say square and add, therefore you can say b square sin square alpha plus b square cos square alpha is equal to 1 plus 1, b square sin square alpha plus cos square alpha is equal to 2. So b square is equal to 2, that implies b is equal to √2 centimeter. Okay, फिर से same as taking a ratio, you can say taking a ratio, that is b sin alpha upon b cos alpha, that is equal to 1 upon 1, that is equal to 1. Therefore tan alpha is equal to 1. So क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 एंड सो ऑन, राइट फ्रेंड्स. सो इट इज लाइक दिस. नेक्स्ट नंबर, a spring balance has a scale that read from 0 to 50 kg. The length of scale is 20 centimeter. A body suspended from this balance when
displace and release oscillate with a period of 0.6 second. चलो what is the period? So period of oscillation that is equal to 0.6 second. What is the weight of the body? Okay, that is you want to find out W is equal to mg, that is your question mark. चलो a square spring balance read from 0 to 50 kg. तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मैक्सिमम मास जो रीड करेगा वो होगा 50 kg और इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा 0.2 मीटर, राइट. सो यू कैन से mg is equal to KL. Therefore you can say here K is equal to mg by L. मैक्सिमम हम कंसिडर करते हैं, दैट इज 50 into 9.8 by 0.2. So when you solve this, then you have 2450 न्यूटन पर मीटर. चलो ये आपका K आ गया. ओके चलो अब पीरियोडिक टाइम का इक्वेशन हमारे पास पता है, दैट T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई के. ओके चलो अब हम स्क्वायर करते हैं, दैट इज यू कैन से टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन के. देयरफॉर m इज इक्वल टू के टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 2450. पीरियोडिक टाइम दैट इज 0.6 स्क्वायर 4 into 3.14 square. Okay, when you solve this, then you have answer that is 22.36 kg. Okay, chalo now weight W is equal to mg. Chalo what is the mass? 22.36 into 9.8, then you have 219.167 Newton, right friends. Next number 2.9. A spring having with a spring constant 1200 Newton per meter. So K is equal to 1200 Newton per meter is mounted on a horizontal table as shown in a figure. A mass of 3 kg, m is equal to 3 kg is attached to the free end of a spring. The mass is then pulled sideways to a distance of 2 cm. That is its amplitude. A is equal to 2 cm, that is a 0.02 meter, and release. Determine the frequency, maximum acceleration and maximum speed. Okay, चलो पहला क्वेश्चन, that is a frequency. So f is equal to 1 upon t, that is 1 upon 2 pi root of k upon m. पीरियोडिक टाइम का रेसिप्रोकल करना है, that is equal to 1 upon 2 into 3.14 रूट ऑफ k की वैल्यू है 1200 upon 3. Okay, so that when you solve this, then you can say it is a 3.18 frequency, that is hertz. Okay, 420. Okay, that you will get 3.18. Second question, maximum acceleration. चलो what is the a maximum? That is the omega square a. Okay, चलो what is the omega square? So k is equal to m omega square. So omega square is equal to k by m. Okay, so k by m into a. So what is the k? So 1200 a 0.02 upon mass, that is a 3. When you solve this, then it is a 8 meter per second square. Okay, and what is the maximum speed?
So V maximum, that is a plus or minus a omega. Okay, that you have to solve this. Okay, आपको solve करना है किस तरह से होगा. Next, 14.10. In previous question, let us take the position of mass when the spring is unstressed at x is equal to 0 and the direction from left to right as a positive direction of x axis. Give x as a function of time for oscillating mass if the moment we start the stopwatch at t is equal to 0, the mass is at mean position, maximum stress, maximum compress. In what way do this function of simple harmonic motion differ from each other in a frequency, in amplitude and in initial phase? Chalo. See, here you can say data k is equal to 1200 Newton per meter, m is equal to 6 kg, a is equal to 4 centimeter, that is a 0.04 meter, and omega 14.14 radian per second. Okay, चलो सॉल्व करते हैं. Since the mean position we have, since at mean position we can say phi is equal to 0. Phi is equal to क्या होगा 0. So x is equal to a sin omega t, that is a 4 sin 14.14 into t. B, at maximum position, at maximum stress position, that is a, you can say x is equal to a. Initial phase, you can say phi is equal to pi by 2 radian. So you can say x is equal to a sin omega t plus pi by 2, that is equal to, you can say, a cos omega t. And see that at compressed position, at compressed position, you can say phi is equal to 3 pi by 2. So you can say x is equal to a sin omega t plus 3 pi by 2 minus a cos omega t. Right friends, so here it is up to 14.10.